हेलो एवरीवन, ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 2 मार्क्स का बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट। इसको प्रूव करने के लिए एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। इसका फार्मूला जो है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R जो है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और P जो है लीनियर मोमेंटम है। फिर मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देयरफॉर dl upon dt is equal to d upon dt of r cross p। r और p दो फंक्शंस हैं। अगर x और y d upon dt of x into y is equal to first function into differentiation of second function plus second function y into differentiation of first function। इसको यहाँ पर यूज करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन r to dp upon dt plus second function p differentiation of first function dr upon dt। dp upon dt, rate of change of linear momentum is force। That means this is equal to R cross F plus momentum P, linear momentum P is mv। Rate of change of position with time is also v। This is equal to R cross F plus cross product of a vector with itself is 0 because it will be magnitude of v into magnitude of v sin 0. Sin 0 is 0. Therefore, this term will be 0. That means dl upon the dt R cross F is the torque। That means torque tau is equal to dl upon dt। We know that d upon dt of a constant, d upon dt of constant is equal to 0। That means if tau is equal to 0, if tau is equal to 0, then that means dl upon dt is equal to 0, and this provides angular momentum L is equal to constant। That means if torque acting on a body is 0, then angular momentum of the body remains constant। This is the proof of conservation of angular momentum। Hope you find this video useful and informative.
Please like it, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video.